Dividend, a passive residual, Module 247, Financial Management. We are continuing our discussion on relevance and irrelevance of dividend and also on the dividend policy as a whole. Another approach towards dividend policy is that dividend should be the passive residual. Residual means बचा हुआ, वो प्रॉफिट जो कि हमारे पास बच जाए उसको डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को पे कर देना चाहिए. द क्वेश्चन इज कि कहाँ से बच जाए वो प्रॉफिट. इट इज सेड दैट एवरी फर्म हैज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर अर्न प्रॉफिट को इन्वेस्ट करके और शेयर होल्डर्स के लिए बहुत सा रिटर्न अर्न किया जा सकता है. सो इफ़ अ फर्म pays dividend, then it should only be after what is left by investing in that particular opportunity. यानी वो अमाउंट जो हमारे पास बच जाए अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में प्रॉफिट को इन्वेस्ट करने के बाद, that is the residual and that is something that should be paid as dividend. This is what the theory says. Now, this residual theory of dividend actually step by step takes us to the point where we can determine the exact amount of dividend that can be distributed amongst the shareholders. The first step is that we need to determine what is the optimal level of capital structure, capital expenditure. यानी हम ये optimum level क्या होता है और capital expenditure क्या है. We have already had a discussion on this. यानी कंपनी या फर्म के लिए वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिसमें वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगी उसको हम ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. वंस वी डिटरमिन दैट, देन वी सी दैट हाउ मच एक्विटी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट. जब हमने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर दूसरा स्टेप ये है, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड एक्विटी, तो फिर हम ये देखेंगे उसमें कितनी एक्विटी की ज़रूरत होगी, एंड दैट एक्विटी विल बी जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स विच आर अर्नड बाय द कंपनी. सो री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स आर देन यूटिलाइज्ड टू मीट दैट एक्विटी रिक्वायरमेंट्स. एंड इफ़ देयर इज़ अ सरप्लस, यानी उस ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट को करने के बाद, एक्विटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद अगर हमारे पास कुछ बच जाएगा तो फिर उस अमाउंट को हम डिविडेंड्स की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड स्टेट्स दैट. So if we look at the formula, the residual theory says that if we have a certain net income, then the dividend amount should be calculated by subtracting the additional equity needed from that net income. यानी इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें एक एग्जाम्पल की शक्ल में, तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी फर्म को 120 मिलियन रुपीस की ज़रूरत है किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड द रिक्वायरमेंट और द डेट एक्विटी रेशियो ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज 70-30, यानी 70% of that 120 million has to be equity, which means that 95 million is the profit and 70% of the amount is the equity requirement. So what we'll do is, first we'll calculate how much will be the requirement of equity, which is 84 million in this case. This 84 million is 70% of the overall value of that project, which is 120 million. And the company has earned a profit of 95 million. So the dividend will be equal to the net income less the additional equity that is required, yani 95 million minus 84 million, and that is 11 million, which will be the maximum amount of dividend that the company can pay. So in this theory, which is called the residual theory, हम इसको इस तरह समराइज करते हैं कि रेजिडुअल थ्योरी में ये कहा जाता है कि वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की शक्ल में दी जाए जो कंपनी अपने ही किसी प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट ना कर सकती हो, यानी जिसके लिए कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद ना हो. An investment opportunity is then it is described or defined as an opportunity of reinvesting the profits in the firm or in the company at a rate higher than that can be earned by the investors themselves. So this residual theory actually states that dividend should only be paid if there is surplus or residual cash or profit available. और अगर सरप्लस हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ना हो, चाहे 10, 20, 30 साल तक भी, तो कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए. एंड इट इज़ totally different from the approach that we have seen in the relevance of dividend.